Hello, good morning students and most welcome on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQ of the topic vectors. So in previous some video lecture we completed first 24 MCQs. All MCQs are very important and most selected from the renowned books of MST CET. So I made a 60 MCQs for this worksheet for the topic vectors. So if you want to download the PDF of vectors MST CET, so kindly check the description of every videos of vectors. You will get the link, that is the PDF of vectors. Kindly touch that link. I will give the app role, then you can download the vectors, that is the PDF of vectors of MST CET. Okay, so all these MCQs, 60 MCQs are very important. If you solve properly these 60 MCQs, then you will definitely crack the MST, the questions on the final exam. Okay, so look at the MCQ number 25. So in MCQ number 25, what is the MCQ number 25? If A, B, C are the vectors, unit vector means what? Whose magnitude is 1, such that A plus B plus C vector is equal to 0. He has given A plus B plus C is equal to 0. Right, and all these three vectors are unit vectors. Then what we have to find? A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो तभी हमको डॉट मिल जाएगा A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, बिकॉज सब 2 टाइम्स हो जाए, 2 टाइम्स A डॉट बी प्लस 2 टाइम्स B डॉट सी प्लस 2 टाइम्स C डॉट A. C डॉट A डॉट C आर टू बी सेम. So this is given which is 0. 0 square is 0. So 1 plus 1 it's a 3 plus 2 times A dot B plus B dot C plus C dot A. So ये प्लस लेफ्ट को माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट बिकम्स -3/2. So left hand side becomes A dot B plus B dot C plus C dot A. So this is the solution which is our question. We have to find this. So answer of this what? -3/2. ऑप्शन देखो यहाँ पर आपको C मिल जाएगा. ओके, बहुत ही सिंपल है. सो स्टार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने उसका स्क्वायर किया एंड दिस बिकॉज वाई, बिकॉज वहाँ पर देखो क्या है, A डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए. सो ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद ही वो आ सकता है, अदरवाइज नहीं. सो दिस इज द MCQ नंबर 25. सो लुक एट द 26 नाउ. व्हाट इज 26? इफ A B C D आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, देन अगर A B C D स्क्वायर है देन वी हैव टू फाइंड दिस B माइनस ए इज इक्वल टू D माइनस ए. ठीक है, सो अगर A स्क्वायर है, A, B, C, D. So this AB and AC and BD, AC and BD are perpendicular. ये perpendicular है. Therefore AC. So बीच में AC dot BD is equal to 0. Two vectors are perpendicular, then their dot is what? 0. A vector and B vector are perpendicular, then A dot B is equal to what? 0. So AC dot BD is equal to 0. AC means C minus A and BD means D minus B, which is equal to 0. I think this will be the answer. C minus A is into D minus B. देखो वहाँ पर C ऑप्शन है, which is absolutely correct. He has given A, B, C, D is a square. सिर्फ A, B, C that vertices are A, B, C, D that are the position vectors of this point A, B, C, D. So AC is perpendicular to BD. So perpendicular means what? Their dot is equal to what? 0. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 25 एंड 26. ओके, अगर आपके हर डाउट्स क्लियर हो रहे हैं हर टॉपिक के वेक्टर्स, पेपर सेकंड के ऑल टॉपिक्स, देन काइंडली फॉलो दिस यूट्यूब चैनल मैथ मेंटर. इसको सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकॉन को हिट करो, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियोस. ओके, सो नेक्स्ट 27 एंड 28.
So after completion of 25 and 26, let's start the MCQ number 27. So what is MCQ number 27? Look at this question here. So 27 में क्या है? If A plus B is equal to C vector, vector A plus vector B is equal to vector C. So A vector, B vector are the one unit vector and vector C is equal to root 2. So it is a 1, B vector is 1, C vector is root 2. This is the magnitude of that vector. Okay, it's root 2. And हमें find करना है, we have to find the angle between the B and C. B and C में find करना है. So A vector is equal to C minus B, equation first. सो बी और सी का एंगल फाइंड करना, तो इसको राइट में शिफ्ट किया, सी माइनस बी हो जाएगा, और उसके साथ सेम डॉट लिया तो ए डॉट ए इज इक्वल टू सी माइनस बी डॉट सी माइनस बी. सो इट इज इक्वल टू सी डॉट सी इज सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पर cos थीटा लिखता हूँ बिकॉज देर इज अ थीटा एंगल बिटवीन दिस 2 पॉइंट प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज 1, सी स्क्वायर इज 2, बी इंटू सी इज रूट 2, cos थीटा बी स्क्वायर इज 1. सो दिस प्लस 1 कैंसल, ये राइट में जाएगा 2 रूट 2, cos थीटा इज इक्वल टू 2, cos theta is equal to 1 by root 2. ये 2 cancel, so this implies theta is equal to pi by 4. Theta is equal to what? Pi by 4. So ये जो important start है वो आपको मिलना चाहिए. So what we have to find? We have to find the angle theta between the vectors B and C. Okay, so A is equal to C minus B. So उसको सेम से डॉट प्रोडक्ट लेना है. Definitely you will get the angle between them. Okay, so this is the 27. Now 28. Look at the 28. The projection of A vector on B vector. Projection of A vector on B है. तो इसका एक फॉर्मूला है A डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी, और सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी. अगर B ऑन A है सो अपॉन क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर. ओके, सो A डॉट व्हाट इज A? गिवन A इज व्हाट? 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, एंड B वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट ही हैज गिवन? I माइनस 2j प्लस के, I minus 2j plus k. So there are the questions for you only, because this display can only seen by you, not by me, because it's a technology and I have display here. So this is A vector and B vector. First I will find A dot B. So strip 2 into 1 2, minus 2 into minus 1 is plus 2, and 1 into 1 is plus 1. This is equal to what? 5. Now magnitude of B under root 1 square plus 2 square plus 1 square, it is a 9. No, B, so 6 हो जाएगा, root 6. So this is equal to 5 by root 6. ऐसा आंसर है? Yes, 5 by root 6. A dot B is 5. Magnitude of B vector is 6. So 5 by root 6. So ऑप्शन क्या है यहाँ पर? B ऑप्शन है. लास्ट टाइम क्या था? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, D ऑप्शन था. ओके, सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट. सो ये बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है. प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मीन्स व्हाट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. अगर बी ऑन ए है सो ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी टू बी सेम, बट अपॉन क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ओके, इफ इट इज ऑन ए वेक्टर. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट, दैट इज प्रोजेक्शन. नाउ विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली. इसके बाद भी वही क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन 30, ये हो गया 27 28. नाउ 29 एंड 30. Now focus on the MCQ number 29. Again same on projection.
Example on projection. A vector, A point, B point, C point are the given. D also. Projection of A, B and C, D. So first of all we have to mention A, B, C and D. So what is A? 1, 2, 3, 4, 1, minus 1. 4, 1, minus 1, 1, 2, 3. What is C and D? 3, minus 1, minus 2. 3, minus 1, minus 2. And D is 4, 0, minus 1. 4, 0, minus 1. हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी सी. ए बी वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर. बी माइनस ए इज व्हाट? 4 minus 1 3i, 1 minus 2 minus j, minus 1 minus 3 minus 4k. AB on CD. What is CD? CD means D minus C. D minus C. 4 minus 3 1i. 0 plus 1 plus j. Minus 1 plus 2 minus 1 plus 2 is k. Okay. So here projection on AB on CD, that is equal to AB dot CD divided by CD. So इसका dot 3 into 1 3, minus 1 into plus 1 minus 1, minus 4 into 1 minus 4 divided by CD under root 1 square plus 1 square plus 1 square. 3 minus 5 minus 2 divided by minus root 3 minus 2 divided by root 3. ये ऑप्शन आ गया बी. सो ये जो भी करना है सिंगल अटेम्प्ट नहीं करना है. यहाँ पर 4 वर्टाइसेस आर गिवन. So we know that this is the position vectors. A vector, B vector, C vector and D vector are the position vectors of point A, B, C, D respectively. AB means B minus A, CD means D minus C. So AB dot CD सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. Got it? So 3 into 1 minus 1 into 1 4 into minus 4 into 1 यहाँ पर लिखना है. CD we have to find the magnitude of vector CD. So ये CD है. 1 square plus 1 square plus 1 square 9. 3 root 3. So this is answer. This is 29. Now 30. What is 30? A vector, B vector are given. So first I will write A vector, then B vector. What is A vector? 3i minus 2j plus 6k. 3i minus 2j plus 6k. What is B vector? Is what? 2i minus 2j. 2i minus 2j plus k. Right. So projection of A on B divided by projection of B on A vector. A on B, B on A. So A on B का formula A dot B divided by B and A dot B divided by what? A. So this term cancel ये ऊपर जाएगा. Magnitude of A vector divided by magnitude of B vector. बस magnitude of A is what? This is equal to under root 9 plus 4 plus 36 divided by under root 4 plus 4 plus 1. 36, 40, 49. 49 means 7. 9 means 3. So this is 7 by 3. MCQ नंबर 30 का आंसर क्या है? 7 by 3. देखो यहाँ पर आंसर 7 by 3 होना जरूरी है. Yes, D option is there. So this is the D option. So these 3 MCQs 28, 29, 30 are the based on the what? Projection of one vector on the other vector. Okay. So this is sufficient study for the projection of any vector on the another vector. Okay. Now we'll take number 31. Okay. So हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए. वेक्टर्स में से कौन सा भी डाउट स्किप नहीं हो. अब हम सिर्फ वेक्टर पढ़ रहे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो ओनली ऑन व्हाट? वेक्टर्स. ओके. लेट्स स्टार्ट द 31, 32. Now okay, ready for 31? Let's start the MCQ number 31. So what is 31? For any vector A. For any vector A. So first of all we have to define vector A.
that is always a1i plus a2j plus a3k, right? And we have to find a dot i, again I. So पहले a dot i फाइंड करेंगे, a dot i, a vector dot I vector, so is equal to, so a1 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ इसको i से मल्टी i डॉट i1 हो जाएगा, सिर्फ a1 आ जाएगा. सो a डॉट i इज व्हाट a1. सो अगेन उससे डॉट लिया, सो a डॉट i, so it is what a1i. Similarly, what will be bj is equal to b की क्या है, b ना, a, similar a, so that will be what a2j and ak is equal to a3k vector. ये पहले किया a डॉट i, so what will be this, only a1. why, इसके साथ i मल्टीप्लाई किया, j dot i, k dot i, this all 0, i dot i is what, only a1. उसके साथ और एक बार i डॉट लिया, i से डॉट लिया, so it becomes a1i. सो a1, a2j, a3k. सो हमें फाइंड करना इन दो तीनों का एडिशन ही करना है, राइट? सो इट विल बी a1i प्लस a2j प्लस a3k. सो व्हाट विल बी आंसर, a. सो 31 का आंसर क्या आना चाहिए, a वेक्टर. सो d इज द ऑप्शन. ओके, दिस इज 31. नाउ 32. व्हाट इज 32? Triangle ABC are the vertices of triangle ABC. What is A vector? That A vertex के 2 1 1. What is B? minus 0 minus 3 0 minus 3 3. And C. What about C? 1 3 2. 1 3 2. Now are the vertices of triangle ABC a unit vector perpendicular to the plane of triangle ABC. So AB AC फाइंड करेंगे, AB and AC, AB cross AC ये फाइंड करेंगे, AB cross AC. So what is AB? AB is B minus A. AB is what? B minus A. हम पहले AB यहाँ पे लिखेंगे, AB B minus A, 0 minus 2 minus 2i minus 4j and plus 2k. This is AB. What is CD? CD not AC. AC. What is AC? AC means 1 minus 2 minus I, 3 minus 1 plus 2j, 2 minus 1 plus k. ये होगा AC वेक्टर. That is C minus A. This is B minus A. So इसका क्रॉस मीन्स वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट I J K minus 2 minus 4 plus 2 minus 1 2 and 1. So what will be this I? Minus 4 minus 4 minus 4 minus 4 0 plus J, नहीं प्लस यहाँ पर माइनस. So minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 और प्लस 2, ये भी जीरो कैसे हो जाएगा, बेटा? minus 2 minus 4 2 minus 1 2 1. सो आए यहाँ पर 4 है, 4 into 1 minus 4 minus 4 ये गलत. आए minus 4 is minus 8 minus J minus 2 plus 2 0 plus k minus 4 or minus 4 minus 8. So it's a minus 8i minus 8k. Okay, this is what AB cross AC. Now we have to find their magnitude. AB cross AC
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अंडर रूट 64 प्लस 0 प्लस 64. So it is a 132, 128. So 8 root 2. This is magnitude. Okay, now a unit vector is perpendicular. A unit vector is perpendicular to what plane of triangle ABC. So unit vector perpendicular, so plus or minus AB cross AC divided by modulus of AB cos AC. So this is equal to plus or minus. It is a minus 8i minus 8j divided by 8 root 2. So it is equal to 8 cancel I plus j divided by root 2 plus or minus I plus j divided by root 2. I plus k, not a k है, a k. I plus k divided by root 2. This is the answer of 32. थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन क्या है यहाँ पर एक सर्टन प्रोसीजर है. ये ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. सो वी हैव टू फाइंड ए बी क्रॉस ए सी because a unit vector is perpendicular to the plane of triangle ABC. So AB means B minus A, AC means C minus A, uska cross product. This is the procedure of cross product. Down this is the magnitude. It is very simple. Magnitude of what? AB cross AC. So and this is the formula, plus or minus modulus में AB cross AC divided by magnitude of AB cross AC. Okay. So this is 31 and 32. Let's start next. Now let's start the MCQ number 33. So what is MCQ number 33? Look at the MCQ number 33. Two adjacent sides of the parallelogram ABCD. Parallelogram means opposite sides are equal, parallel. This is parallelogram ABCD. Okay. Whose adjacent sides are 2i plus 4j minus 5k. So AB and AD, AB and AD. So this is what first is what AB is 2i plus 4j. This is AB. 2i plus 4j minus 5k and AD. So that is I plus 2j plus 3k. I plus 2j plus 3k. Right, these are the adjacent sides of the parallelogram. Then the value of AC cross BD, AC cross BD, ये फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD विच इज इक्वल टू 2 times AB क्रॉस AD, AB क्रॉस AD. So AB cross AD का 2 times, that is AC cross BD. AC, this is AC and this is BD. Okay, so first we find out AB cross AD. AB cross product AD. Now this is the determinant I j k 2 4 minus 5 1 2 3. So what will be this? 12 plus 10, 12 plus 10 22 minus j 6 plus 5, 6 plus 5 11j plus k. So what is will be the k? 4 minus 4 0. So this is AB cross AD. So taking 22 common, it's 2i minus j. So this is AB cross AD. So then its magnitude AB cross AD, we have to find it's 2 times of AB cross AD. So 22 into bracket root 5.
सो 2 टाइम्स ये 22 बाहर मॉडुलस 2 + 1 22 रूट टू आता है, देखो 22 √2 √5, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज अ 22, 4 + 1 5, दिस इज 22 √5. देखो यहाँ पर आंसर है क्या 22 √5. सो दैट इज आंसर इज व्हाट बी ऑप्शन. ओके, सो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. So AC cross BD is equal to 2 times the sum of two, that is the adjacent side, AB cross AD. So now 34. Read the question number 34. So if A cross B is equal to C, B cross C is equal to A, C cross A is equal to B. A cross B is equal to C, B cross C is equal to A, and A cross C is equal to B. So this happens if and only if they are perpendicular to each other. Therefore, so A cross A is equal to 1. So this is answer. They are perpendicular. That's why A cross A is equal to what? 1. So answer of 34 is C. Because that are perpendicular. That is what they are A, B, C are mutually perpendicular, because this is condition. A, B, C are mutually perpendicular. That's why their A cross A is equal to how much? 1. So option number C for the MCQ number 34. Now 35 and 36, last two MCQs. Now after completion of this 35 and 36, 33 and 34 over, now 35 and 36. So look at the MCQ number 35. So if A, B, C are unit vector, means that magnitude is 1. A vector is equal to B vector is equal to C vector, which is equal to 1, right? And one more thing he has given, A vector is equal to 2 times B cross C. 2 times B cross C. So what is B cross C? So this is BC sin theta, because theta is angle between these two vectors, that is A vector. So this is 1, this is 1, 2 into sin theta. So this implies sin theta is equal to 1/2, and here theta is equal to 30 degree, means what? pi/6. So 35 का आंसर क्या है? pi/6 means what? D option. So remember one thing, for the cross product there is angle that which is a sin theta, and for the dot product there is what? Cos theta. ये difference है. So this answer theta is equal to what? pi/6. Now 36, MCQ number 36. Which one is the last MCQs of today's video lecture? Read the question number 36. If vector A, magnitude of vector A which is equal to 2, magnitude of vector B is equal to 7, and what? A cross B is equal to this, A cross B. So A cross B is what? 3i plus 2j plus 6k. 3i plus 2j plus 6k. So this is what? 36. So A cross B is equal to actually AB sin theta. First of all, find out what? Modulus of A cross B. So under root A1 square plus B1 square, A2 square plus A3 square, this is 9 plus 4 plus 36, which is equal to 49, and that is what? 7. So this is A cross B. But what is actually A cross B? A cross B is AB sin theta. AB sin theta is equal to 7. So this is AB sin theta. A is 2, B is 7, sin theta is equal to 7. 7 7 cancel, again sin theta is equal to 1/2, and this implies theta is equal to what? pi/6. So here again theta is equal to pi/6. Option is what? B. So check the option for both the MCQs 35 and 36. So 35 and 36 is the example on the theta angle between the two vectors. Okay, so here cross product is there, that's why it is AB sin theta. If it is a dot product, then what? AB cos theta. Okay, so this is the 35 and 36. So 25 to 36, it means the total
12 questions are completed in this video lecture. So we'll start more example on the next video lecture, that is remaining MCQs. Okay, so stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. Today I am going to stop here. Thank you very much.